have very nicely done its function, and everything that has been made has some mean or some reason behind it. Why we don't need an extensive field of vision in the nasal area or the inferior area? Because the other eye is going to cover it. We also have another eye. So the other eye is going to overlap the visual field that is being not seen by one eye. The other eye is going to cover it. But temporal field of vision is the only field of vision which cannot be covered by the other eye. That's why nature have provided an extensive field of view in the temporal side, and that is 90 degrees. So remember this, that how much is the extension of the visual field in all four quadrants. The physiological blindness first we discussed in the last class. It is about 15 degrees temporal to the fixation. I told you how to practice it and how to visualize your own physiological blindness first. Now there are some terminologies which will be used again and again in the visual field chapter, and those include scotoma. Scotoma is an area of reduced sensitivity surrounded by a more sensitive area. Okay? So whenever you will read a visual field printout, there might be a scotoma over there which is abnormal, and how will you recognize that scotoma? That will be a reduced sensitivity zone which will be surrounded by high sensitivity zone. Depression, area of reduced sensitivity without a normal surround. It means that depression is most of the time a general defect, a generalized defect. Okay? If you will see a reduced sensitivity area, you will not see a high sensitivity area around it, because that reduced sensitivity area will spread up to the periphery. फिर उसको हम depression कहते हैं. Isopter is a threshold line joining points of equal sensitivity on a visual field chart. Whenever we draw a visual field chart, there are some points in the visual field which perceive equal sensitivity, which have an equal sensitivity of perception. If you will link all those areas, they will make up an isopter. Fixation, whenever you fixate on any object, it's your fovea which is functioning. So a point of fixation is that area which has been fixated. Central field. Central field means wherever you are fixating, 30 degrees around it will be your central visual field. जैसे आप किसी चीज को देख रहे हैं, वो एक सेंट्रल पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द 30 डिग्रीज तक अगर आप चले जाएं, तो दैट इज योर सेंट्रल फील्ड ऑफ व्यू. Jerram's area is a central visual field within 25 degrees of fixation. टोटल 30 डिग्रीज तक जा रहे हैं सेंट्रल विजुअल फील्ड. इसके अंदर ही अंदर 25 डिग्रीज तक अगर आप बात करें तो उसको जेरम्स एरिया का नाम भी दिया गया. Now, this is a schematic picture. The above one, this one is showing you the pattern of the nerve fibers that are coming from the retina and are collecting onto the optic nerve fiber.
Now this is the optic disc. Over here on its temporal side is the macula. Okay. In the center of the macula is the fovea. Then in between this macula and the optic disc are these fibers which are called maculopapillary bundle. This is the maculopapillary bundle, which is the crucial part of the nerve fibers that is carrying the message from the fovea up to the optic disc. जिस तरह fovea most sensitive area है रेटिना का, इसी तरह से अगर ये नर्व फाइबर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं सारे, तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो जोन है इट्स द maculopapillary bundle. This one is the most sensitive zone. ठीक है? On this side we have the superotemporal retinal nerve fibers. Over here we have inferoretinal nerve fibers. On this side we have superonasal retinal nerve fibers, and over here we have inferonasal retinal nerve fibers. You can see all of them are converging onto the optic disc because they have to make up the optic nerve. How is the arrangement of these nerve fibers if you take a cut section of the retina and the optic nerve? You will see that in this picture the most peripheral retinal nerve fibers, they are on the outer side of the optic nerve. The adjustment of the nerve fibers in the optic nerve has been shown in this picture. The most peripheral retinal nerve fibers, they are adjusted in the outermost zone, and the most central retinal nerve fibers, which are near the fovea, they are situated deep into the center of the optic nerve. Now this is again a quality of nature, that the portion of the vision which is most important is this portion, the central part of the posterior pole of the retina. This is the most sensitive and the most important part of the retina. So the nerve fibers which are running from here into the optic nerve should be in the safest place, and the safest place is the deepest most portion of the optic nerve which is present over here. अब यहाँ पे जरा ये मैग्नीफाई हो गया है, तो ये ज़्यादा अच्छा नजर आ रहा है. ये these fibers, these white color, they are from the posterior pole. You can trace them and you can see them that they are from the posterior pole. तो यहाँ पे जो sensitive most part of the retina है वो यहाँ पर है, और जो least sensitive part of the retina है वो यहाँ पर है periphery में. इसके जो nerve fibers हैं अगर वो damage भी हो गए तो it's not going to affect the vision to that extent. That's why they are situated superficial. ये सबसे superficial होते हैं optic nerve में, जबकि ये जो central part है इसके fibers deepest most है. मतलब इनको नेचर ने छुपा कर रखा हुआ है कि अगर कोई चोट लगे, कोई डैमेज हो या कोई मसला हो तो ये सबसे अंदर सेफ मोस्ट पोर्शन. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट ऑप्टिक न्यूरोपैथीज.
Again, this is a picture which is showing you a visual field printout. Okay? This is a schematic diagram. Over here, two meridia are being drawn. These are just imaginary media. Okay? One is the vertical meridian, other is the horizontal meridian. Okay? Wherever both of these intersect each other is the central point of fixation. Okay? Just a little bit temporal to it is the physiological blind spot, which is situated more in the inferior part as compared to the superior. आप देखिए ज्यादा पोर्शन इस ब्लाइंड स्पॉट का वो नीचे की तरफ और थोड़ा सा पार्ट ऊपर की तरफ. Remember, this is not the retina. This is not showing you the retinal arrangement, nerve fiber arrangement. This is showing you the visual field. यही चीज जो आपका पुराना एडिशन था, जो जतोई बुक जो है आपकी, उसमें यही चीज प्रॉब्लम थी जो स्टूडेंट्स बार बार कंफ्यूज होते थे. और मेरे ख्याल से आप उनके नए एडिशन में शायद उन्होंने करेक्शन कर दी है. तो आपने विजुअल फील्ड को अलग रखना है और रेटिनल नर्व फाइबर अरेंजमेंट को अलग रखना है. यहाँ जो बात हो रही है दैट इज अबाउट द विजुअल फील्ड. ठीक है? यू कैन correspond it with the retinal nerve fiber. How can you correspond it? You can correspond it that this portion, this quadrant of the visual field, which is the superotemporal visual field, this will be perceived by inferonasal retina. This quadrant of the visual field, which is the superonasal visual field, will be perceived by inferotemporal retina. ठीक है? इसी तरीके से the inferotemporal field of view, this will be perceived by superotemporal retina. Superonasal retina, I'm sorry. Superonasal retina. Similarly, the inferonasal field of view, this will be perceived by superotemporal retina. Opposite side पे आप चले जाए. ठीक है? Inverted and laterally inversed दोनों चीजें होंगी. अब ये जो blind spot है, this is, you all know that actually this is nothing but this is showing you the arrangement of optic disc, the existence of optic disc in the retina. ठीक है? इसकी जो यहाँ पे ये अरेंजमेंट दिखाई गई है इस ब्लाइंड स्पॉट की, this is showing that the optic disc is a little bit on the superior portion of the retina as compared to the inferior. तभी तो उसका जो फील्ड डिफेक्ट आया है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आया. ठीक है? तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द नेचुरल अरेंजमेंट. दिस इज नेचुरल. दिस इज नॉट अ एबनॉर्मल थिंग. दिस इज अ नेचुरल अरेंजमेंट. द विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स that are associated with glaucoma, they are non-specific and they actually correlate with the retinal ganglion cells defects and the retinal nerve fiber defect. In the earliest classes, I told you that the problem starts with the retinal ganglion cell, and then it spreads up to the retinal nerve fiber, and finally it is shown in the optic disc, the changes in the optic disc. So that's why
The field defects are also the one which are showing us the defects in the basically in the retinal nerve fiber layer, but they also correspond to a little bit to the ganglions layer. This is the first glaucomatous field defect that we are going to discuss. Basically, it's a nasal step. I will show you the picture. It's the earliest glaucomatous field defect, and it depends upon the bundle defect width, but respect the horizontal meridian. अब ये आपको मैं दिखाता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा. जी, this picture is showing all the field defects. Okay. This is the central point of fixation. This is the physiological blind spot. Nasal step will be on the nasal side of this central point of fixation. ये जो central point of fixation है, इसके nasal side पे ये nasal field defect होता है. ठीक है. जी. The second one is temporal wedge. Like the one on the nasal side, this field defect it occurs on the temporal side. But we know that on temporal side we also have our physiological blind spot. On the nasal side we don't have any blind spot. So it's very easy to recognize the nasal step. वहाँ पे अगर nasal step होता है तो वो या तो इस लाइन के ऊपर होगा या नीचे होगा. और आपके लिए बहुत आसान है कि भाई इस साइड पे डिफेक्ट है, दूसरी साइड पे ब्लाइंड स्पॉट है, आप फौरन उसका नाम दे देंगे इट्स अ नेजल स्टेप. लेकिन अगर it comes on the temporal side, we know that we have the physiological blind spot also on this side. So the temporal wedge, as the name suggests, कि ये एक इसकी यूँ समझ लें दुम निकली हुई है blind spot की, which is going up to the periphery. It's a tail of the blind spot. ये physiological blind spot है, इसकी यहाँ से देखिए एक tail निकली है जो periphery तक जा रही है. And again, either it is on the superior or the inferior part of this horizontal meridian. ज़्यादातर जो field defects आप देखेंगे, they will be obeying the principle of not crossing the meridian. अगर कोई horizontal meridian के ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे है तो नीचे ही रहेगा, nasal है तो nasal रहेगा, temporal है तो temporal. कहीं-कहीं पे exceptions हैं. ठीक है? So this is the temporal wedge. This is also because of the damage to the nerve fibers that are on the nasal side. You know that interpretation is opposite. टेम्पोरल साइड पे अगर डैमेज हो रहा है फील्ड ऑफ व्यू में, तो रेटिना में उसको आप अगर सिमुलेट करेंगे तो इट विल बी ऑन द नेजल साइड. तो नेजल रेटिनल नर्व फाइबर्स डैमेज होंगे तो टेम्पोरल वेज बनेगा. इसी तरह से टेम्पोरल रेटिनल नर्व फाइबर डैमेज होते हैं तो नेजल स्टेप बनता है. ठीक है. Then comes the arcuate scotoma, a very common visual field defect. ठीक है. इसकी characteristic क्या है? That it starts from the physiological blind spot and then it runs towards the nasal side. It again obeys the horizontal meridian. उसके या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा. ठीक है. And it broadens as it crosses the vertical meridian. आप देखें
जैसे ही ये यहाँ से इसने क्रॉस किया है वर्टिकल मेरिडिया को, दूसरी साइड गया तो ये ब्रॉड हो गया। एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट्स नॉट टचिंग द पेरिफेरल फील्ड, उससे पहले ही ये खत्म हो गया। इस शेप को हम आर्क्यूएट शेप कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम आर्क्यूएट स्कोटोमा या जैरम स्कोटोमा। ठीक है। And why does it occurs? Near the blind spot, the scotoma is narrow because of convergence of the nerve fibers onto the disc. अब ये बता रहे हैं कि over here you can see that this arcuate scotoma is narrow, while on the opposite side this arcuate scotoma is wide. This is because the retinal nerve fiber arrangement is such that they converge onto the optic disc, and this physiological blind spot, this is basically showing you the the optic disc area. So the retinal nerve fibers, they are converging onto the optic disc, which has been shown in this field defect as convergence of this scotoma onto the physiological blind spot. ठीक है। तो यही वजह है कि ये यहाँ पे आके आप देखें ये बिल्कुल बारीक हो गया है और दूसरी तरफ ये चौड़ा है। दिस इज एक्चुअली showing you the arrangement of the retinal nerve fibers. Okay? Arcuate scotoma with peripheral breakthrough. This is another scotoma where you can see that earlier it didn't bend up to the periphery, लेकिन यहाँ पे आप देखें it is bent up to the periphery on the nasal side as well as on the temporal side. यहाँ से भी इसकी धूम निकल आई है और यहाँ भी ये फैलकर पेरिफेरी तक चला गया। ये देखिए यहाँ से भी ये इससे जोड़ रहा है पेरिफेरी से और यहाँ से भी ये पेरिफेरी तक पहुँच। That's why the name has been changed and it is said arcuate scotoma with peripheral breakthrough. देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप में से कुछ स्टूडेंट इस वक्त मैं देखता हूँ who are not serious, they are just discussing with each other. मैं अगर point out करूँगा that will be a dishonor पूरी क्लास के साथ। तो ये आप seriously इसको लें, कंसंट्रेशन से सुने, because this is a short note which comes nearly every year in your exam. Write down the visual field defects of glaucoma. उसमें आपको ये तस्वीरें भी बनानी पड़ेंगी और इसकी थोड़ी बहुत डिटेल भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है। Paracentral scotoma. This is a little bit beside the central part of the visual field. अब ये इसको मैं आपको दिखाता हूँ। जी, you can see that this is the physiological blind spot. Okay, this is the central point of fixation. Just paracentral part of it has a scotoma which is being named as paracentral scotoma, and it is not necessary that it touches the blind spot, क्योंकि इसमें फिर आप कंफ्यूज होंगे कि ये आर्क्यूएट स्कोटोमा तो नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है इसमें। यहाँ पे इन्होंने दिखाया अदरवाइज पैरासेंट्रल स्कोटोमा के न करो हियर सेंटर के आजू बाजू में किसी भी साइड पे ये हो सकता है। ठीक है। जी, यहाँ पे देखें ये जिसमें सारे स्कोटोमा दिख रहे हैं, पैरासेंट्रल स्कोटोमा कौन सा है? ये पैरासेंट्रल स्कोटोमा है। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा उससे साइड पे ये पैरासेंट्रल स्कोटोमा, ये ज्यादा क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। ठीक है। Then blind spot changes. The physiological blind spot, it also change
its shape in glaucoma. Okay? It's not necessary that it remains the same. Sometimes it enlarges. फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो क्या निशानी होगी इसकी? हाउ विल द पेशेंट कंप्लेन? द पेशेंट इज गोइंग टू कंप्लेन दैट ही इज सीइंग अ एब्नॉर्मल एरिया इन हिज टेम्पोरल फील्ड ऑफ व्यू. वही चीज जो आप अभी एलिसिट कर रहे थे लास्ट क्लास में, कि पॉइंट ऑफ फिक्सेशन लिया और एक टारगेट को आप टेम्पोरल पेरिफेरी से नेजल की तरफ लेकर आए, तो कहीं एक जगह पे वो आपको नजर नहीं आया, वो पोर्शन जहाँ वो नजर नहीं आ रहा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड enlargement of physiological blind spot. ठीक है, और ये भी याद रखें कि all these field defects they are being complained by literate pupils who are highly conscious about their general condition and their vision. The peoples who have glaucoma and they are in the interior of sin, they are not educated, they do not notify the visual field defects and they just neglect it. Until and unless the glaucoma reduces their vision, they do not come to us. It's the only literate pupils, educated pupils, well-conscious pupils who come in this earliest most stage where we can control the glaucoma and it has yet not affected the vision. तो ये field defect आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पेशेंट का भला कर सकें. Because this is the point where you can control the glaucoma. I am not saying that you can reverse the glaucoma. You can stop the glaucomatous changes. No. There has been no medication up till now which 100% stops the progression of glaucoma. You can only make it slow, you can slow the progression of the glaucoma, but you cannot entirely stop it 100%. You can only slow it down. तो यहाँ अगर वो इस स्टेज पे आ जाता है and you start the medication, the patient is going to get very much benefit. ठीक है, compliance की हम बात करेंगे जब हम ट्रीटमेंट पे आएंगे, तो वो एक अलग मसला है. Patient compliance is very less in anti-glaucoma medication as compared to the other medication. वो हम डिस्कस करेंगे, वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग टॉपिक. ठीक है, अच्छा. enlargement के बाद elongation vertically with the development of sedal scotoma, which is a sickle shaped scotoma, that is the superior or inferior extension of the physiological blind spot. अब ये सीडल स्कोटोमा आई थिंक इसमें पिक्चर में है यहाँ पे जी. In this picture, this is the center point of vision. On the temporal side, this is the physiological blind spot. अब इसमें आप देखें कि ये blind spot जो है, इसकी टेल निकल आई है ऊपर से कभी नीचे से. It's not grounded. It has changed its shape. It has changed into a sedal shape. That's why the name has been given sedal scotoma. ये देखिए, ठीक है. Elongation vertically. ये vertically elongate हो गया. It's not circular now. Blind spot earlier was circular because optic disc is circular. तो blind spot भी circular, लेकिन यहाँ पे it has elongated. When it elongates, the name will be sedal scotoma. ठीक है, अब ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है. फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे आपने देखा, ये ब्लाइंड स्पॉट जो कि पहले सर्कुलर था, it has now elongated superiorly as well as inferiorly. So this name is now sedal scotoma. ठीक है. I told you this is a picture which is showing the different scotomas of the glaucoma. The first one is this
आर्कुएट स्कोटोमा, ये पर्पल कलर में जो आपको नजर आ रहा है, ब्लाइंड स्पॉट से निकला है और दूसरी साइड पे जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है दिस इज ब्लाइंड स्पॉट, पैरासेंट्रल स्कोटोमा, सीडिल स्कोटोमा। इसकी ये देखिए नीचे लॉन्गेट हुआ है, इसको हम सीडिल स्कोटोमा कहेंगे। ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये नीचे को लंबा हो गया है, इसको हम सीडिल स्कोटोमा कहेंगे। सीको सेंट्रल स्कोटोमा, दिस इज रेयर स्कोटोमा। जरूरी नहीं है कि ये बताएं आप, लेकिन ये ध्यान में आप रख सकते हैं। सीको सेंट्रल मीन्स an scotoma which spreads from the central point of vision up to the physiological blindness. A scotoma which spreads from central point of fixation up to the physiological blindness. That is secocentral scotoma. अब ये है central scotoma. Basically, central scotoma is not the scotoma of glaucoma. Central scotoma is a scotoma of optic nerve diseases. ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि सेंट्रल स्कोटोमा is it a part of glaucomatous field defect, you will say no. Why? Because central part of vision is spared in glaucoma up to the late stages. ठीक है। जो सबसे सेंट्रल पार्ट ऑफ विजन है, ये आखिर तक स्पेयर रहता है। कैसे? ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं सारा काला हो गया, बट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ विजन इज स्टिल इंटैक्ट। दिस इज कॉल्ड टनल विजन। टनल विजन बीच में से कुछ को नजर आएगा और साइडों से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसको वो किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं? Some of the well-literate person, they complain that while they are driving any car or any bike or any vehicle crosses beside them, and they don't even perceive that anything is passing beside until and unless it comes in their front view of vision. ठीक है। वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनके बाजू से कोई और चली जाती है गाड़ी, गुजर के आगे क्रॉस करते, तो वो उनको पता भी नहीं चलता जब तक वो बिल्कुल सामने नहीं आ जाती। एंड देन देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स इन दीज पीपल्स, एंड दैट इज व्हाई इन फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज they not only check the visual acuity, the color vision, but also they check the visual field. If a person's visual field is defective, they are not going to issue them the driving license. ठीक है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से सिर्फ और सिर्फ विजुअल एक्विटी और कलर विजन से ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाता है। ठीक है। कोई भी विजुअल फील्ड चेक नहीं करता और उसको विजुअल जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता। अब अगर आप कोई पेशेंट है, उसकी टनल विजन है, उसको सामने ये सीनरी इस तरीके से नजर आएगी, सब कुछ गायब हो जाएगा, लेकिन सेंटर में उसको नजर आएगा। ठीक है। And why this is occurring? End stage ये सब कुछ ब्लैक आउट हो जाएगा। This is the end stage. जब ये हो जाए तो आप कहेंगे कि ये एंड स्टेज है। अब ये क्यों हो रहा है, इसमें वजह क्या है, ये आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। Over here, I told you that these fibers. What is the name of these fibers? Maculopapillary bundle of nerve fiber. Very good. So मतलब है you are present here. So this is the maculopapillary bundle fibers, and this part of the retinal nerve fibers
is most resistant to changes in intraocular pressure. अगर ग्लूकोमा की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है नर्व फाइबर्स में, तो दिस इज द लास्ट पोर्शन विच इज गोइंग टू बी डैमेज्ड। इसमें इतनी ताकत होती है, इतनी बर्दाश्त होती है कि ये ग्लूकोमा को आखिरी स्टेज तक रोक के रखता है, until and unless एंड स्टेज occurs। उसके बाद आखिर में ये बंडल भी खत्म हो जाता है तो सेंट्रल विजन खत्म हो जाता है। ठीक है, एग्जामिनर आस्क यू इन द ग्लूकोमा स्टेशन, याद रखें ग्लूकोमा का अलग से एक स्टेशन बनता है आपके एग्जाम में, इंटरैक्टिव स्टेशन which carries 15 marks, and the examiner asks you different questions about these things. ये सवाल भी वो पूछते हैं that why the central vision is spared in glaucoma up to the advanced stages। आपको रीजन पता चल गया कि ये वजह है, ये फाइबर्स हैं, इनमें इतनी ताकत होती है, बर्दाश्त होती है कि ये आखिर तक चलते हैं, उसके बाद खत्म। तो ये इसकी वजह थी। एक डिफेक्ट रह गया, वो करके हम क्लास खत्म करते हैं। नहीं, ये 2 सेकंड। दिस इज डबल आर्क्वेट स्कोटोमा, डबल आर्क्वेट स्कोटोमा, वही आर्क्वेट स्कोटोमा है। अगर ये दोनों साइड पे हो जाता है तो हम इसको डबल आर्क्वेट स्कोटोमा। ठीक है, तो दीज आर ऑल फील्ड डिफेक्ट्स। इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इसके जो है नोट्स बनाइए या आपके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं।